Srila Prabhupada ki, ISKCON founder Acharya Jagat Guru Srila Prabhupada ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. All glories to Samul devotees, all glories to Samul devotees, all glories to Samul devotees, all glories to Shri Guru Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhirayat Nashtapharesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtaki Krishna Swadamo Bhagate Dharma Jnana Didi Saha Kalo Nashtadrisham Esha Puraniko Yunonita. This morning we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 21, Text 26. Yuyam tadamodadvam Pitre devashayo mala Kartu shashtur anugyatus Tuyam yat preta tatphalam Yuyam tadamodadvam Pitre devashayo mala Kartu shashtur anugyatus Tuyam yat preta tatphalam Yuyam tadamodadvam Pitre devashayo mala Kartu shashtur anugyatus Kartu shashtur anugyatus Tuyam yat preta tatphalam Ananodadvam Anumodadvam Pitre devashayo malaha Kartu shashtur anugyatus Tuyam yat preta tatphalam Anumodadvam Mataji's. No Mataji's. Kartu shashtur anugyatus Yam yat preta tatphalam.
यहाँ पर उपस्थित तुम सभी उस अनुमोदकम मेरे प्रस्ताव का अनुमोदन करें मित्र लोक से आने वाले लोग वे स्वर्ग से आने वाले लोग विषय बड़े बड़े मुनि तथा साधु पुरुष अमला पाप कर्मों से निर्मल क्रतु कर्ता शास्तु आज्ञा देने वाला अनुज्ञातु समर्थक का तुल्यम समान यद जो प्रेत्य मरकर तत् वह फलम फल मैं समस्त शुद्ध अंतकरण वाले देवताओं पितरों तथा साधु पुरुषों से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें, क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी भी कर्म का फल इसके कर्ता, आदेशकर्ता तथा समर्थक के द्वारा समान रूप से भोग्य होता है। पृथु महाराज का शासन परिपूर्ण था, क्योंकि वह वैदिक आदेशों के अनुसार चलाया जा रहा था। पृथु महाराज पहले ही बता चुके हैं कि सरकार का मुख्य कर्तव्य यह देखना है कि सभी लोग अपना अपना कर्तव्य निभाएं और पृष्ठ भावना में तिरपन तक ऊपर उठें। सरकार को इस तरह चलाया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतः पृष्ठ भावना भावित हो सके। अतः राजा पृथु चाह रहे थे कि वे इसमें उनका संपूर्ण सहयोग दे, क्योंकि उनकी सहमति होने पर मृत्यु के पश्चात उन्हें भी राजा के ही समान लाभ मिलेगा। यदि कुशल राजा होने के कारण पृथु महाराज को स्वर्ग की प्राप्ति हो तो उनको सहयोग देने वाली प्रजा भी उनके साथ ऊपर उठ सकेगी। क्योंकि इस समय जो कुछ भावनात्मक आंदोलन चलाया जा रहा है वह शुद्ध, परिपूर्ण तथा प्रमाणिक है। पृथु महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण कर रहा है। अतः जो भी इस आंदोलन में सहयोग देता है या इसके नियमों को स्वीकार करता है उसे भी वही फल मिलेगा जो इस भावना का सक्रिय रूप से प्रचार करने वाले कार्यकर्ताओं को मिलेगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे। हे गुरो ज्ञानदादीनबन्धो स्वनन्ददात करुणैकसिन्धो वृन्दावनासीन हितावतार प्रसीद राधा प्रणय प्रचार। नाम शिष्टमनुमपि सचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजमुरपुरीं मातरीं गोष्ठवातिं राधाकुन्दं गिरिवरं महोराधिकमानमासं तप्तो यस्य पतितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्दे रूपसनातनो रघुविभो श्रीजीवगोपालको वन्दे नन्दाद्भुजस्वयं श्रीचैतन्यमहाप्रभुं नित्योऽपि यत्प्रसादात् सद्भक्तिशास्त्रभवार्थः। नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामपदं देवम् अवधूतशिरोमणिं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदाए तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदिदेवी सत्यवते नमो नमः। So in the word-for-word translation, it's mentioned here that Rishaya, great sages and saintly persons, they are amala, they are purified of all sinful activities. The dress does not make the man.
Can you become a saintly person by growing a big beard क्या बहुत महान व्यक्ति बन सकते हैं बहुत बड़ी दाढ़ी वाला, and put big Rudraksha mala or big tulsi beads बहुत बड़ी रुद्राक्ष की माला धारण करके या बहुत बड़ी तुलसी माला धारण करके and jata, जटा रखे, big tilak and chandan? बहुत बड़ा तिलक लगा के चंदन लगाकर Now I have become a saintly person. तो मैं अब बहुत महान साधु बन गया हूँ। The dress does not make the man. ये आदमी को नहीं आता, We have to cleanse our heart. हमें अपना हृदय परिवर्तित करना होगा। There's work to do in the spiritual life. आध्यात्मिक जगत में कार्य करना होता है। Is it so easy? Cleanse the heart? Can you get a toothbrush and get down there and scrub? क्या ये बहुत आसान है कि आप एक टूथब्रश से उसको अपने हृदय को उसको साफ कर लें? No. You have to cleanse the heart by hearing about Krishna. आपको अपने हृदय की सफाई करनी होगी कृष्ण के बारे में सुनकर, Specifically by hearing Srimad Bhagavatam and hearing holy name of Krishna. खासकर श्रीमद् भागवत सुनकर और भगवान का नाम सुनकर। It's stated here, Pravishta Karna Randraina Swanam Bhava Sauravatam Dunoti Shamalam Krishna Salilasya Yatasharat. That by hearing Karna Randraina through the ear, we become purified. कानों से सुनकर हम शुद्ध होते हैं। We can go to a shower, we can pour water in our body. We can't cleanse the heart with water. We can't cleanse the heart with some toothbrush or brush. We have to cleanse the heart from the ear. Karna Randraina. तो हम जब नहाते हैं तो हम पानी डालते हैं, पर किसी ब्रश से हम हृदय की सफाई नहीं कर सकते, उस पानी से हृदय की सफाई नहीं कर सकते। हृदय को शुद्ध करने के लिए हमें कानों से सुनना होगा। And what is the result when that happens? और उसका क्या परिणाम होता है? That the heart becomes free from all lust, greed, anger, fear, malice, depression, all of the things that afflict us, make us unhappy in the material world. We become free just by hearing. इसका क्या परिणाम होता है? कि हृदय से जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर ये सब भूल जाते हैं। ये सारी चीजें जो हमें दुखी करते हैं भौतिक संसार के लिए, ये सब छूट जाते हैं। Salilasya yata sharat. It means when the autumn rains come, it cleanses all the muddy pools of water. जैसे शरद ऋतु में जब वर्षा होती है तो वो नदी के सारे पानी को साफ कर देती है। So our heart has become contaminated with all kinds of lust and greed. अभी जो हमारे हृदय है वो बहुत दूषित है इन सभी प्रकार की इच्छाओं से, By contact with this material world. क्योंकि हम इस भौतिक संसार के संपर्क में हैं। Bhagavad Gita says, Satam Rajastama iti guna prakriti sambhava nibaddanti mahabaho dehi dehinam abjayam. When we fall to this material world, we become influenced by the modes of nature. भौतिक हमें बताती है कि जब हम इस भौतिक संसार में आते हैं तो हम प्रकृति के तीन गुणों में बन जाते हैं। Like rain. Rain falls from the sky pure, right? जैसे कि बारिश जब बादल से गिरती है तो शुद्ध होती है, You can drink it. आप सब पी सकते हैं, No need of water purification. वाटर प्यूरिफायर की जरूरत नहीं पड़ती। But what happens when it touches the earth? It becomes muddy. जैसे वो धरती को छूती है वो कीचड़ जैसे हो जाती है। So we've touched the modes of material nature coming to this material. Maya, Mama Maya Duratyaya. The insurmountable influence of Satam, Rajas and Tamas. जैसे हम भौतिक संसार में आते हैं मम माया के होते हैं, हम इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। Krishna explains in Bhagavad Gita. Krishna explains in Bhagavad कृष्ण Gita ये भगवद गीता में हमें समझाते हैं that we come to this world, we get a particular birth due to our association with the modes of material nature. कि हम जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर जन्म मिलता है क्योंकि हमारे तीन गुणों के प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव होता है And we become obliged to work under the influence of modes of material nature. और हम बाध्य होते हैं इन तीन प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने के लिए। He says, Prakriti kriyamanani gonai karmani sarvacha ahankara vimudatma kartaham iti manyate. Only a fool thinks, I'm in charge. We're controlled in conditioned life by the modes of material nature. तो एक स्वयं मूर्ख व्यक्ति समझता है कि वो स्वतंत्र है, जबकि हम सब बाध्य हैं इस भौतिक संसार में कार्य करने के लिए। So the real work of spiritual life is to become free from the influence of the modes. तो हमें इस प्रकार से कार्य करना चाहिए ताकि प्रकृति के तीनों गुणों से हम अपने आप फ्री कर सकें। And when one is here, amala, free from the propensity to commit sin, then he can be said to be a saintly person. जैसे
जब हम पाप करने की जो propensity है उससे जब मुक्त होते हैं तो हम शुद्ध होते हैं. Out of ego, we want to present ourselves as great saintly persons. अहंकार के कारण कई बार हम अपने आप को बहुत ही महान साधु पुरुष दिखाना चाहते हैं. I have a friend, my godbrother. मेरा एक दोस्त है, मेरे गुरु भाई हैं. He's grown big beard उन्हें बहुत बड़ी दाढ़ी हुआ है and he wears lungi, और वो लुंगी पहनते हैं. dressing like Babaji. बाबा जी की तरह. And his Facebook name is blah 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 Babaji. Blah blah blah. I don't want to mention his name. उनका फेसबुक का नाम कुछ बाबा जी है करके है. But he's never taken Babaji initiation. Still, he's wearing Babaji Vish. उन्होंने तो बाबा जी निष्ठा नहीं किया, फिर भी वो बाबा जी की तरह वेशभूषा रखे हुए हैं. And he's jumping here and there to this sadhu, this Babaji, this guru, this mahant, trying to get some nectar, the real nectar of spiritual life. तो अलग-अलग गुरु, अलग-अलग महंत, अलग-अलग बाबा जी के सुनने जाते हैं. कुछ अमृत लेना चाह रहे हैं उस आध्यात्मिक संसार का. Anyone can put on a lungi and grow a beard. कोई भी लुंगी पहन सकता है और दाढ़ी बढ़ा सकता है. And many people do. बहुत सारे लोग करते ही हैं. Does that make him Babaji? क्या वो बाबा जी बन जाते हैं? We read about six Goswamis, Chaktva Turnamashesha Mandalapati, Shrening Sada Tuchavat. They left everything as insignificant. Tuchavat. तो हम साइड गोस्वामी के बारे में सोचते हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, बिल्कुल तुच्छ पर. They were Mandalapati. They had crores of gold coins at their disposal. They're deeply learned. They're high position in society. Mandalapati. वो मंडलपति थे, उनके करोड़ों करोड़ों सोने की संपत्ति थी, बहुत ही हाई पोजीशन पर होते हैं. But they left it all. पर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया. This is their qualification for what? Gopi Bhava Rasamrita Abdilari Kalola Magno Muhur Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shi Jiva Gopalako. ये उनकी क्वालिफिकेशन है. Because they left everything as insignificant. उन्होंने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया, बिल्कुल insignificant, बिल्कुल तुच्छ पर समझकर. They didn't just put on Babaji Vesh and Kopin and now I've become great sadhu. ऐसा नहीं कि उन्होंने बाबा जी वेश धारण कर लिया, फोटो पहले और अपने आप को बहुत बड़ा साधु बोलने लगे. This is cheap sadhu. ये बहुत ही सस्ते साधु हैं. Don't be cheap sadhu. सस्ते साधु मत करिए. Be real sadhu. असली साधु बनिए. They say there's two types of sadhus. ऐसा बताया गया है कि दो प्रकार के साधु होते One is Bhajanananda sadhu, who is in ecstasy, chanting holy name and serving and preaching. हैं. एक होते हैं भजनानंदी साधु, जो Another, आनंद की अनुभूति होती है भगवान का नाम लेने में. another person is Bhojanananda sadhu. दूसरे होते हैं भोजनानंद साधु, He's just happy eating and having peaceful life. जिन्हें खाने पीने में और शांति में जीवन जीने में बहुत मजा आता है. You want to know what is sadhu? Or you want to know what is a sadhu? पर अगर आपको जानना है साधु क्या होते हैं, What is a high class Rasik Vaishnava? हाई क्लास बहुत ही उच्च दर्जे के रसिक वैष्णव कौन होते हैं? Sometimes we'll hear people talking like this. You need to go to a high class Rasik Vaishnava कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, आपको बहुत ही महान रसिक वैष्णव के पास जाना चाहिए, to get the real nectar. वहीं से आपको असली अमृत मिलेगा. The world has never seen such a high class Rasik Vaishnava as A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. तो इस संसार में ऐसी स्वामी प्रभुपाद के अलावा इससे महान कोई और रसिक वैष्णव नहीं देखा है. And you want to get the nectar? पर अगर आप अमृत लेना चाहते हैं, Go out on book distribution and get spit on, get arrested, get physically assaulted. This is the nectar. तो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर जाइए, वहाँ थोड़ी मार खाइए, आपको अरेस्ट करेंगे तो आपको असली अमृत मिलेगा. Not Manjari Bhav. किसी को दिल भाव से नहीं मिलेगा. You want Radha Bhavam. This is our objective. This is the highest objective of Krishna consciousness. Gaudiya Vaishnavism is Radha Dasyam. अगर आप राधा भाव चाहते हैं, राधा दास चाहते हैं, जो हमारे गौड़े वैष्णव का परम लक्ष्य है, We pray Radhe Vrindavanadishe Karunamrita Vahini Kripaya Nijapadabja Dasyam Majam Pradiyam. O Srimati Radharani, you're an ocean overflowing with mercy. Please give me service at your lotus feet. तो हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, और श्रीमती राधा रानी, आप कृपा की सागर हैं, कृपया आप मेरे पर थोड़ी दया करिए, मुझे अपनी कुछ सेवा कीजिए. So will you get Radha Dasyam, growing your beard and putting on lungi? तो आपको लगता है राधा दास उत्पन्न कर सकते हैं, Putting big दाढ़ी बांधकर या लुंगी पहनकर, putting big tilak and jata?
जटा डालकर और तिलक लगाकर। How do you get Radha Dasyam in this age of Kali? राधा दास्यम कैसे आप उत्पन्न कर सकते हैं इस कलयुग में? We get Radha Dasyam by serving Gora. तो आप राधा दास्यम उत्पन्न कर सकते हैं गौर को सर्व करके। Srila Prabhupada Saraswati Thakur said, Yata yata Gora Paravinde, Vindeti Bhaktim Krita Punya Rasi, Tata Tudut Sarpati Vidyakasmat, Radha Padamba Bhavas Sudambu Rasi. Get Radha Dasyam by serving Gora, by the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो श्री परबोधन सरस्वती बताते हैं कि आप राधा दास्यम उत्पन्न करते हैं चैतन्य महाप्रभु के मिशन में सेवा करके। So who is the greatest Rasik Vaishnava? High class Rasik Vaishnava the world has seen? Or Srila Prabhupada? कौन है वो महान रसिक वैष्णव जो इस दुनिया ने देखा है? हमारे अपने श्रील प्रभुपाद। And what do high class Rasik Vaishnavas do? तो वो क्या करते हैं? हाई क्लास रसिक वैष्णव क्या करते हैं? Do they practice nirjan bhajan, seclude themselves in some holy place and sit and do lack of nam? तो क्या वो किसी कोने में जाकर कहीं पे अकेले में जप करते हैं? 2 लाख नाम रोज जप करते हैं? No, high class Rasik Vaishnavas get on a boat with no money in their pocket, with no guarantee of support, and almost lose their life crossing Atlantic Ocean. तो हाई क्लास रसिक वैष्णव क्या करते हैं? वो किसी नाव पर जाते हैं बिना अपनी जान की परवाह करे हुए अटलांटिक ओशन पार करते हैं, ये भी नहीं जानते कि आगे कोई सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। When Srila Prabhupada got up Jalutute, he said, I didn't know whether to turn right or turn left. जब श्रील प्रभुपाद जल्दी से उठते हैं वो बताते हैं कि उन्हें ये नहीं पता था कि बाएं जाना है या दाएं जाना है। And he went to the house of Sally and Gopal Agarwal. और फिर वो शैली और गोपाल अग्रवाल के घर गए। They're meat eaters. वो मीट खाने वाले लोग थे। And they're keeping a cat. Prabhupada had to keep his vegetables next to the cat food and the hamburger. Gai kamas in the refrigerator. तो प्रभुपाद जो अपनी सब्जियां रखते थे वो उसी फ्रिज में रखते थे जहाँ पर वो अपना मीट रखते थे, वो गाय का मांस रखते थे और बिल्ली का खाना रखते थे। He said, never mind, it's okay. उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। And he would cook for them and befriend them. तो उन्होंने प्रभुपाद ने उनसे दोस्ती बढ़ाई, उनके लिए खाना भी पकाया था। And to her dying day, Sally Agarwal and Gopal Agarwal had love in their heart for Srila Prabhupada. और अपने मृत्यु के दिन तक शैली अग्रवाल गोपाल अग्रवाल के दिल में प्रभुपाद के लिए बहुत प्रेम था। Rasik Vaishnava doesn't mind waiting in line behind his so-called disciples to use the bathroom. जो रसिक वैष्णव हैं वो लाइन में खड़े होकर अपने सो-कॉल्ड डिसाइपल्स के साथ बाथरूम की लाइन में खड़े होने पर भी कोई उन्हें परवाह नहीं होती। At 26th Avenue, there was one bathroom in Srila Prabhupada's apartment. No other bathroom. 26 एवेन्यू में सिर्फ एक ही बाथरूम था प्रभुपाद के कमरे के पास। So there's a queue to use the bathroom. And Srila Prabhupada is standing in line, standing on queue to use the bathroom. तो वहाँ लाइन लगती थी, प्रभुपाद भी उस लाइन में लगते थे बाथरूम को यूज करने की लाइन में। Such unprecedented humility, simply to preach the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. इतनी गाढ़ विनम्रता प्रभुपाद ने दिखाई भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए। To somehow or other perform the impossible task of giving the highest conception of tattva to the lowest class of people. प्रभुपाद ने ये सब किया था कि ये एक बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क था कि सबसे हाईएस्ट जो नॉलेज है वो सबसे लोएस्ट क्लास को देने का प्रयास किया प्रभुपाद ने। So Srila Prabhupada said, I'm prepared to serve them meat and wine, but let them chant the holy name. प्रभुपाद बताते हैं कि मैं उन्हें शराब और मीट भी सर्व कर सकता हूँ अगर वो भगवान का नाम लेंगे। And what is the result? This temple is the result. All of you are the result of Srila Prabhupada's high-class Rasik relationship with Sri Chaitanya Mahaprabhu. इसका क्या परिणाम है? ये मंदिर इसका परिणाम है। आप सब लोग इसका परिणाम है कि कैसे जो श्री प्रभुपाद ने जो चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जो सेवा करी, You are the result of that. आप सब इसी का परिणाम है। You're sitting here today because of his sacrifice. आप सब यहाँ बैठे हैं क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत सैक्रिफाइस किया है। Because Srila Prabhupada stepped off the Jaladuta. क्योंकि श्रील प्रभुपाद जलदूत पर गए थे। If he hadn't, would this temple be here? अगर वो नहीं गए होते तो ये मंदिर भी याद नहीं होता। Would you have a guru? क्या आपके गुरु होते? Would you be wearing kantimala and tilak? क्या आप कंठी वाला तिलक धारण कर रहे होते? Dhoti sari? साड़ी या धोती पहन Where के? would you be and what would you be doing if Srila Prabhupada didn't step off Jaladuta? अगर श्रील प्रभुपाद जलदूत पर नहीं होते तो आज आप कहाँ होते?
if he wasn't willing to stand in the snow, the freezing cold of New York City, and stand on line to use the bathroom. अगर श्रील प्रभुपाद योग की इतनी बर्फ वाली सड़कों पे नहीं गए होते या फिर बाथरूम की लाइन में नहीं खड़े होते तो आप कहाँ होते आज? Please reflect on these things and understand what is the high-class Rasik Vaishnava. प्लीज इसके बारे में सोचिए तो जानिए कि एक हाई क्लास रसूल वैष्णव कौन होते हैं। Dress does not make the man. तो जो वेशभूषा है वो साधु नहीं बनाती। So I want to tell you a very nice story I heard. Two stories. कथा है आपको बताने के लिए। Srila Prabhupada had many beloved godbrothers, प्रभुपाद के बहुत सारे बहुत अच्छे गुरु भाई थे, and he had his enemies also. कुछ उनके शत्रु भी थे। This is a material world, it's a very natural thing. Friends and enemies. Prabhupada didn't live in a vacuum. He didn't live in a vacuum where there's no like nirvishesh. तो ये कलयुग है, भौतिक संसार है, तो यहाँ पे शत्रु और मित्र होना स्वाभाविक बात है। प्रभुपाद कोई अंतरिक्ष में नहीं रहते थे। So one of Srila Prabhupada's most beloved friends was Srila Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj. प्रभुपाद के बहुत ही प्रिय मित्र थे अकिंचन कृष्णदास बाबाजी महाराज। Real Babaji, रियल बाबाजी, not fake Babaji, कोई नकली साधु नहीं, नकली बाबाजी नहीं। a duplicate Babaji. He loved Prabhupada with all his heart, and Prabhupada loved him with all of his. तो वो प्रभुपाद को बिल्कुल हृदय से प्रेम करते थे, प्रभुपाद उनको बिल्कुल हृदय से प्रेम करते थे। He always knew when Srila Prabhupada was in Vrindavan, जब भी उन्हें पता होता था कि प्रभुपाद वृंदावन में हैं, and he'd walk right into Prabhupada's room and sit down next to him, like और सीधा वो right प्रभुपाद next. के रूम में घुस जाते थे, उनके साथ आके बैठ जाते थे। And they're laughing and joking and slapping each other in the back, slapping each other on the knee, enjoying such friendly, loving relationship. तो वो एक दूसरे के साथ बहुत ही घनिष्ठता से व्यवहार करते थे। And this devotee, Srila Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj, was also extraordinary devotee, pure devotee, 100% through and through. ये जो अकिंचन कृष्णदास बाबाजी महाराज थे, बिल्कुल असाधारण व्यक्ति थे, असाधारण भक्त थे। Once he was having little bodily trouble and they took him to the doctor. तो एक बार उनको शरीर में कुछ कठिनाई हुई, तो उनको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। So the doctor put a stethoscope to his heart to hear his heart. जो डॉक्टर थे उन्होंने स्टेथोस्कोप लगाया उनके हृदय पर। So if you put to my heart, what we hear? Dung dung, dung dung, dung dung. तो अगर आप मेरे हृदय पर स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो आपको धड़कन ऐसी कुछ आवाज आएगी। They put the stethoscope to Srila Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj. What did they hear? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Extraordinary devotee. तो जो उन्होंने उनके हृदय पर स्टेथोस्कोप लगाया तो उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई दिया। बहुत ही असाधारण व्यक्ति थे। So Srila Prabhupada was sitting with Srila Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj and Srila Prabhupada's brother Bhakti Hriday Ban Maharaj. Bhakti Hriday Ban Maharaj. प्रभुपाद के एक और गुरु भाई थे, उनका नाम था भक्ति हृदय बन महाराज। Srila Prabhupada did not have a happy relationship with Bhakti Hriday Ban Maharaj. तो उनके साथ Sripad प्रभुपाद Bhakti हृदय Hriday. महाराज से उनका प्रभुपाद का बहुत अच्छा संबंध नहीं था। So Srila Akinchana Krishna Babaji Maharaj took the moment in hand and he asked Van Maharaj, said, "You're also English speaker, powerful speaker, deeply learned in the Shastra, and you went to America and you preached in America and you preached in London. तो अकिंचन कृष्णदास बाबाजी वन महाराज के पास जाकर उन्हें बोलते हैं कि आप भी बहुत ही आप भी इंग्लिश स्पीकिंग, आप भी अंग्रेजी भाषा बोल सकते हैं, आप भी शास्त्रों में निपुण हैं, तो आप भी क्यों नहीं प्रभुपाद की मदद करते? वो अमेरिका में प्रचार करते हैं, आप लंदन में प्रचार कर सकते हैं। And your godbrother who's sitting here also, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he also speaks English, he also traveled in the West, he also preached Harinam Sankirtan. यहाँ प्रभुपाद हैं, आपके आपके गुरु भाई हैं, वे भी प्रचार करते हैं, ये ट्रैवल करके पाश्चात्य जगत में प्रचार करते हैं। But you were a failure and he was a success. Why? पर आप फेल हो गए और ये सक्सेसफुल हो गए, पता है क्यों? He said, because this person, A.C. Bhaktivedanta Swami, had impeccable, incalculable faith in the holy name of Krishna. क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि आप फेल हो गए, क्योंकि ये जो ऐसे भक्तिदास स्वामी प्रभुपाद हैं, इनकी भगवान के नाम में गणना ना करने लायक श्रद्धा है, Complete faith. बिल्कुल प्रगाढ़ श्रद्धा है। And because of that, he is the world's greatest acharya. इसी कारण से वो इस दुनिया के सबसे महान आचार्य है। Understand, this is a disciple.
of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, saying about his godbrother, more than our guru, greatest acharya the world has seen. ये आप ये समझिए कि ये जो व्यक्ति बोल रहे हैं कि भक्तिदास सरस्वती महाराज के शिष्य हैं, अपने गुरु भाई के बारे में बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये हमारे गुरु महाराज से भी ज़्यादा इन्होंने किया है, Because of his faith in the holy name, because complete dependence on the holy name. क्योंकि उनकी श्रद्धा थी, पूर्ण तरीके से शरणागति थी भगवान के नाम पर। He took the holy name to every continent of the world. प्रभुपाद जी भगवान के पवित्र नाम को हर कॉन्टिनेंट में लेके गए। So one thing is happening, the 150th anniversary of the appearance of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is approaching. तो जब भक्तिदास सरस्वती ठाकुर महाराज का 150वां अपने प्राकट्य दिवस मनाया जा रहा था, And the Gaudiya Math intends to celebrate this in a very big way. तो गौड़िया मठ ने इसको बहुत ही भव्य तरीके से मनाना चाह रहे थे। They're going to do a 3-year program. Began this year, they had a great gathering in Puri. 3 year Yeah, for 3 years they're going to celebrate. Every year for 3 3 years. साल तक इसको मनाना चाहते थे और वो पूरी में इसके लिए एकत्रित होना चाह रहे थे। So they want to celebrate the appearance of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. But what is the meaning to the appearance of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur without acknowledging the person who took the mission of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and Bhakti Vinod Thakur and spread it all over the world? तो उनके प्राकट्य दिवस मनाने का क्या फायदा जब आप उस व्यक्ति को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, इन्होंने उनके संदेश को भक्ति विनोद ठाकुर के संदेश को पूरे संसार में प्रचारित किया। Why is it that the picture of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur is on altars in Africa, in China, in America, in Mexico, in Australia, all over Europe, in Russia, Ukraine? Why is it there? Because of the pitching campaign of our Srila Prabhupada. तो ऐसा कैसे हुआ कि भक्तिदास सरस्वती ठाकुर महाराज की जो फोटो है वो ऑल्टर्स में है, अफ्रीका में, यूरोप में, रशिया में, यूक्रेन में, किनके कारण? हमारे अपने श्री प्रभुपाद के प्रचार के कारण। Srila Prabhupada, indisputably, historically, objectively, is the greatest acharya the world has seen. बिना किसी मतभेद के श्री प्रभुपाद जो है इस दुनिया में देखे गए सबसे महान आचार्य हैं। We can say, more than Ramanuja, more than Madhva. They won't like us to hear us say that, but this is the objective truth. More than Ramanuja and Madhva, who never left India. तो हम ये कह सकते हैं, उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा, पर सत्य यही है कि रामानुजाचार्य से भी ज़्यादा जो महान है वो श्री प्रभुपाद है। So some people, they say about our Prabhupada, they say Swami Maharaj. कई बार वो हमारे प्रभुपाद को स्वामी महाराज बोलते हैं। This is his official sannyas name. ये उनका ऑफिशियल संन्यास का नाम है। And they say, no, only Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is Prabhupada. वो ये कहते हैं कि सिर्फ भक्तिदास सरस्वती ठाकुर जो है वो प्रभुपाद है। But try to understand. Prabhupada is a title. तो हमें ये समझना होगा कि प्रभुपाद जो है वो एक पदवी है। It's not a unique title for Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. वो सिर्फ भक्तिदास सरस्वती ठाकुर महाराज के लिए नहीं है। We say Srila Rupa Goswami Prabhupada, Srila Jiva Goswami Prabhupada. ऐसे बताया गया है श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद, श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद। Why? क्यों ऐसा क्यों? Because of their contribution to Gaudiya Vaishnavism, their unique contribution to Gaudiya Vaishnavism. क्योंकि उनका एक अद्वितीय भागीदारी है या कंट्रीब्यूशन है गौड़िया वैष्णव समाज में। So still to this day, some members of Gaudiya Math still say Swami Maharaj, and they refuse to say Prabhupada. तो अभी भी आज भी इस दिन तक भी अभी भी गौड़िया मठ के कुछ लोग हैं जो प्रभुपाद को स्वामी महाराज बोलते हैं, प्रभुपाद नहीं बोलते। Not all. At this meeting in Puri, one of these people was up on the podium saying, only Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, no other Prabhupada. तो एक व्यक्ति जो पोडियम पर वहाँ पर थे इस पूरी मीटिंग में, तो वो बोलते हैं सिर्फ भक्तिदास सरस्वती प्रभुपाद हो सकते हैं और कोई प्रभुपाद नहीं हो सकता। Some of the other Gaudiya Mathacharyas took him and said, you can't say this. You cannot say this. बाकी गौड़िया मठ के आचार्यों ने उनको बोला कि आप ऐसा नहीं कह सकते। Because this is the truth. Who has made the holy name of Krishna? Who garlanded the whole planet with the holy name of Krishna? Only our Prabhupada. No other person. क्योंकि और कौन है जो इस पूरे संसार को कृष्ण नाम की माला पहना
So we should understand these things very deeply and represent him as is being requested here, to follow Prithu Maharaj. And the persons who follow get the same result as the leader. Prithu Maharaj is telling society you have to follow the principles of Varnashram Dharma and always remember the Supreme Personality of Godhead. Previous verse says this. And this is the formula to achieve the Supreme Personality of Godhead at the end of life. Not just to follow Varnashram. Varnashram is external. Chaitanya Mahaprabhu said, Edo Bhaya. He didn't reject Varnashram, but he said this is external. So tell me something more. It's a beautiful conversation with Srila Ramananda Rai. So that something more is to always keep our mind fixed on Krishna. So Varnashram is for the masses of people. And Krishna Smaranam is for the class, the few, the fortunate few, who can bring their mind to the lotus feet of Krishna. Bhajahure mana Srinanda Nandana Abhaya Charana Ravindare Durlava Manava Janama Satsange Doraho E Bhava Sindhure. That we bring our mind to Krishna and the association of Vaishnavas. And cross the entire ocean of material existence in the association, Satsanga, in the association of Vaishnavas. So this is our process for the select few, the fortunate few who have come and surrendered their lives to Chaitanya Mahaprabhu's mission. And for the masses, atak pumbir dvija sheshta varnashrama vibhagasha sonushthitasya dharmasya sansidhir haritoshanam. They can please Hari by doing sonushthitasya dharma. According to the life they've gotten by their previous activity. And that's given to us by devatas. That we've created this life by our previous activities, we can say. So we accept that, but we can't say that human society is all the same. That we're all equal, is all the same. This is not Vedic conception of life. What is it? It is Marxism. Karl Marx's philosophy. Everyone is the same. This foolish idea. How are we all the same? Someone is richer, someone is poorer. Someone's intelligent, someone's less intelligent. Someone's strong, someone's weak. Someone's a leader, someone's a follower. There's thousands of differences in human society. So to artificially say, everyone is equal, is the philosophy of a fool. So how to manage society? Acknowledge the differences that is created by the Lord. He says in Gita, Chaturvanyam maya shishtam guna karma vibhagashaha
That this is Maya system. I have created this system. भगवान बोल रहे हैं कि मैंने ही बनाया है ये सिस्टम. And what is that system? Varnashram dharma. क्या है वो सिस्टम? वो है वर्णाश्रम धर्म. 4 ashrams, 4 varnas. 4 आश्रम 4 वर्ण. And how is the distinction made? Vibhagasha. Vibhagasha means the distinctions, the categories. How do we determine category? By guna and by karma. Your quality and your work. Unfortunately, in this beautiful country, India, whole Varnashram thing has been spoiled by people who think, I am a Brahmin. Narad Muni told Yidisha, Yasaya lakshanam pungsam varna bhyavanjikam yadanyatrat pidishyeta tattenaiva vanirnishad. If someone is born in the family of Brahmin, but his qualities are those of a Shudra or less, then he is a Shudra or less by quality. My father was an orthopedic surgeon. Is there any volunteer amongst you that I can operate on you? I can do some surgery? My father is a surgeon. By your philosophy, I should be able to do surgery. Does that make sense? My father is a doctor, I must be a doctor also. My father is a Brahmin, I must be a Brahmin. Everything is by guna and karma. I was very fortunate to join ISKCON in 1973. It was the very best decision of my whole life. And I joined in Portland, Oregon. Portland, as the name suggests, is a port city. A big, huge passenger ship can navigate right to the middle of the city. So it was Janmashtami, and one very large cargo ship was parked in the middle of the city from India called Aradhana. So the Indian crew came to know there's Hare Krishna temple in Portland, and they all came to participate in Janmashtami. But they were all drunk. One man pulled his thread out. Yes, I am Brahmin. I am a Brahmin. You can buy this thread for 2 paisa. Does that make you Brahmin? Guna karma vibhagashaha. By quality and work. What is the work of a Brahmin? You just give him money and he eats? No. This isn't the work of a Brahmin. Just to eat. Bhojanananda swadu. Patan yajan dana pratigraha, Shastra says. That you study Shastra and you teach Shastra. Yajan, you worship the deity by Brahminical standard, and you teach other people to come to that standard and also worship the deity. Dana pratigraha, accept charity and give charity. Samadhamatavasacham kantar arjavamevacha jnana vijnanam astikyam brahma karma swabham. 6 ways of working and 9 qualities. This makes a Brahmin. 6 qualities of working and 9 qualities.
ways of working and 9 qualities of. ये 6 तरीके जो बताए गए हैं और जो 9 क्वालिटी है ये ब्राह्मण को बनाती है. This is a Brahman. There's no mention of Janma anywhere in Shastra. You become Brahman by Janma? शास्त्र में कहीं नहीं बताया है कि कोई जन्म से ब्राह्मण होता है. So please excuse me if anyone here is born in Brahmin family. मैं उनसे मांगना चाहूँगा अगर आप में से कोई यहाँ ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है. But we are truth speakers and this is Shastra. क्योंकि हम सच बोलते हैं और ये शास्त्र में है. So we should become Brahman. हमें ब्राह्मण बनना होगा. But do you become Brahman when Guru gives one of these threads? कैसे ब्राह्मण बनेंगे जब गुरु ये धागा देंगे? Hey Prabhu, I got second initiation. Now I'm a Brahmin. हे प्रभु, हमें ब्राह्मण बन गया, हमें सेकंड इनिशिएशन हो गई है. You also have to develop the qualities. The thread doesn't make you a Brahmin. आपको अपने अंदर गुण विकसित करने होंगे. ये धागा आपको ब्राह्मण नहीं बनाने वाला. Matajis aren't wearing thread. Some of them very qualified Brahmanis. जो माताजी होती हैं वो कोई धागा नहीं पहनती, पर उनमें से बहुत सी हैं जो बहुत ही महान व्यक्ति हैं. So don't be proud of your thread. Now I've got thread. ये धागा पहनने से कोई क्या सकता है? Develop the qualities of a Brahmin because the thread won't take you back to Godhead. तो ये ब्राह्मण की क्वालिटी नहीं, ये धागा है आपको भगवत धाम नहीं ले जा सकता. Your love of God, your feeling for Krishna will take you back, qualify you to go back to Godhead. विश्व प्रेम भगवान के लिए आपकी क्या संवेदना है वो आपको भगवत धाम ले जा सकती है. So Srila Prabhupada mentions in the last line of this purport a very important idea. कृपा जो है अपने पर्पट की आखिरी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं. So you can read that. क्योंकि इस समय जो कृष्ण भावनात्मक आंदोलन चलाया जा रहा है वह शुद्ध, परिपूर्ण तथा प्रमाणित है और विष्णु महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण कर रहा है. अतः जो भी इस आंदोलन में सहयोग देता है या इसके नियमों को स्वीकार करता है उसे वही फल मिलेगा जो कि भावनात्मक का सक्रिय रूप से प्रचार करने वाले कार्यकर्ताओं को मिलेगा. So when we cooperate together, all different types of persons, then we all get the same result, we go back to Godhead. अगर हम कोऑपरेट करते हैं तो हम सबको वही फल प्राप्त होगा. हम सब भगवत धाम वापस आएंगे. This is real freedom from caste discrimination. ये असली छुटकारा है, असली फ्रीडम है जो जात पात का भेदभाव से. Artificially, they want to uplift the untouchables, the Bangis, Chamars, Adivasi people. Let them come up. Let them come up, but how? तो कृत्रिम रूप से वो ये कह सकते हैं कि जो निम्न वर्ण है उसको हम उठा रहे हैं, पर वो कैसे उनका उत्थान होगा? How will we all come up on the strength of Krishna consciousness? तो कैसे हम सबका उत्थान कैसे हो सकता है जब हम फिर भावना से जुड़ेंगे? Where we acknowledge differences, but we acknowledge similarity simultaneously. जब हम ये समझेंगे कि हाँ अंतर भी है और साथ में ये भी जानेंगे कि समानताएं भी हैं. That anyone who comes and cooperates with this movement, he makes some contribution to this movement, goes back to Godhead. जब हम ये समझेंगे कि कोई भी व्यक्ति जब इस आंदोलन में जुड़ता है, इस आंदोलन में सेवा करता है, तो भगवत धाम जा सकता है. As the followers of Prithu Maharaj were benefited by following his instruction, we are also benefited by following the instructions of A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. As he went back to God, we will follow him. As your Guru is going back to God, you will also follow him. जैसा यहाँ पे पृथ्वी महाराज के जो पृथ्वी महाराज बता रहे हैं कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, तो अगर वो उनका अनुसरण करेंगे तो उन्हें भी वही फल प्राप्त होगा जो पृथ्वी महाराज को प्राप्त होगा. इसी प्रकार से अगर हम प्रभुपाद का अनुसरण करेंगे तो प्रभुपाद भगवत धाम गए हैं, आपके गुरु भगवत धाम जाएंगे और आप भी भगवत धाम जा सकते हैं. This is real equality. यह असली समानता है. Lord says, Mami parta vipashyatya yepisu papayonaya striyo vaishastata shudras tepiyanti param gatim. Everyone goes back to Godhead. But Srila Prabhupada said, Mr. Nair must stay. So this is a wonderful effect of this beautiful Krishna consciousness movement, ISKCON. Someone can be sannyasi, traveling, preaching all over the world, or you can be mother, changing diapers and feeding your baby, and you get the same result.
दोनों को सेम रिजल्ट मिलेगा। Because every pure devotee has a mother. क्योंकि हर शुद्ध भक्त की माता तो होती है। And mother is first guru, जो माता है वो पहली गुरु है। making unparalleled contribution to human society by giving mother's love. क्योंकि वो एक अद्वितीय कंट्रीब्यूशन देती है मानव समाज में अपना प्रेम देकर। Do you think Srila Prabhupada's mother went back to Godhead? आपको क्या लगता है कि कृपा जी की माता है वो भगवान? Oh no, no, many more births for her. You think so? Then you're a fool. आपको लगता है कि उनके बहुत सारे जन्म होंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भूल गए। She's a mother of pure devotee. तो एक शुद्ध भक्त की माता है वो। And Lord Chaitanya Mahaprabhu has sent many pure devotees to our society. I was very fortunate. Yesterday, they invited me to come meet all these kids up on the 5th floor. All cute little kids. Hare Krishna Prabhu. All glories to Srila Prabhupada. So it came time for questions. The teacher said, "Do you have any questions?" So these little 4 and 5-year-old children are asking most profound questions that are suitable, that Maharaj Parikshit is asking Shukadev from the mouth of a child, a 4-year-old, 5-year-old child. These are not ordinary children. They are our greatest asset. And every devotee in this community should see to their protection and upliftment. This is a very dangerous world and it's full of evil personalities. And horrible things can happen to vulnerable children. So it's the responsibility of every member of our society to see the welfare and protection of the children that have taken shelter in Srila Prabhupada's movement. Because that child we see today running and making mischief and crying and carrying on, he may be the next Acharya. He may have thousands of disciples in the future. But we say, oh, the little brat, so uncontrolled, just running here and there, creating mischief. How can we tolerate? Remember, Prabhupada said these children are Vaikuntha children. And caring for them is as good as traveling all over the world and preaching Krishna consciousness. Prabhupada said, Pujari, most fortunate person. Said Pujari is liberated soul. He's waking Krishna. He's putting Krishna to rest. Krishna get up, Krishna go to sleep, now eat, now it's time to dress, now it's time for your bath. These are the activities of the spiritual world. Therefore, Srila Prabhupada said, Pujari is the most fortunate person. He's always with Krishna. And he will go back to Godhead. The mothers go, the pujari go, the manager goes, the preacher goes, the book distributor goes, the floor washer goes. Everyone goes back to Godhead by cooperating with Srila Prabhupada's ISKCON society. So please take up some service, your heart and soul. And Chaktva deham punarjama naiti mameti sorjana. Leave this body, never come back here, go back to Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Vancha kalpatubhascha kripa sindhu devacha,
Patitanam Pavinibhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Any comment or question? You take the microphone. Thank you so much for very precious time for coming over here. I have a question. Like you said in the lecture, that we have to cleanse ourselves, not externally but internally. And for internal cleanliness, we have the Harinam and Nityam Bhagavad Sevya. So there are 6 evils that we are bound. We all human beings, conditioned human beings are bound. Lust, anger, attachment. So jealousy, envy is also there. So could you please give us some practical things to overcome this envy? You say. प्रभुजी का प्रश्न है जैसे आपने हमें बताया कि हमें अपने आप को शुद्ध करना है, तो शुद्ध करने के लिए बहुत ही चीज जिसकी जरूरत होती है जो हमारे भीतर होती है वो है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या से क्या आप कुछ ऐसे पॉइंट बता सकते हैं जिससे हम ईर्ष्या को कम कर सकते हैं? First thing is to understand what it is. To understand what is envy. पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ईर्ष्या होती क्या है, envy होती क्या है। Ultimately, envy means envy of Krishna. दूसरे तरीके से देखा जाए तो ईर्ष्या का मतलब सिर्फ कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। He says, Parusham Nishu, I am the ability in man. कृष्ण बोल रहे हैं कि पौरुषम निषु, कि कोई भी व्यक्ति अगर कार्य कर सकता है तो मैं हूँ। So if you see someone like this Prabhuji is playing such beautiful mridanga, so expert mridanga. जैसे आप किसी को देखते हैं तो ये जो प्रभुजी बहुत अच्छा मृदंग बजाते हैं। I've been trying to learn how to play mridanga for 50 years and still I can't play. मैं जो हूँ 50 साल से प्रयास कर रहा हूँ मृदंग बजाने का, आज तक नहीं बजा पाया। So if I think, why does he get to play? मैं इस सोच में कि ये क्यों बजा पा रहा है? We can think like that, or we can think, here is the opulence of the Supreme Lord. The ability bestowed upon this person by Krishna, is given by Krishna. तो आप ये भी सोच सकते हैं कि ये कृष्ण का ऐश्वर्य है जो कि प्रभु के ऊपर है कि वो मृदंग बजा पा रहे हैं। So as we progress in spiritual life, our envy towards Krishna dissolves, which means our envy towards other personalities also dissolves. जैसे जैसे हम भक्ति में भक्ति करते हैं तो हमारी जो कृष्ण से ईर्ष्या है वो कम होती है और इसी तरीके से हमारे अन्य लोगों से भी ईर्ष्या कम होती है। So paramo nirmatsaranam satam. Nirmatsarata means that you can't stand to see someone else progressing, to see someone better than you. तो ये ईर्ष्या होती है तब जब हम किसी दूसरे को हमसे प्रोग्रेस करते हुए देखते हैं या फिर हमसे अच्छे पोजीशन में देखते हैं। What is better? He said, what is better in this world, in Krishna consciousness? इस दुनिया में बेहतर क्या है? कृष्ण इस भावना से बेहतर क्या है? Prabhupada said if the pujari is taking a flower and he's offering to the lotus feet of the Lord, he puts the flower on the lotus feet of the Lord and there's an insect. And the insect crawls onto the feet of the deity. The insect is as good as the pujari. प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे कोई पुजारी है वो भगवान को अगर फूल अर्पित कर रहा है और उस फूल के अंदर कोई कीड़ा है तो वह चलता हुआ अगर वो भगवान के चरणों पर पहुंच जाता है तो वो जो कीड़ा है वो भी उतना ही सौभाग्यशाली जितना वो पुजारी है। And we also become envious when we're not satisfied in our own life. हम ईर्ष्यालु इसलिए भी होते हैं जब हम अपने खुद के जीवन से संतुष्टि नहीं होते। If you're fully satisfied in your own life, there's no question of envy. अगर आप अपने अपने जीवन से ही संतुष्ट हैं तो उसको ईर्ष्या का कोई मतलब नहीं होता। So in Krishna consciousness, we can be lusty for Krishna. We can be greedy for Krishna. We can be angry for Krishna. But you cannot be envious for Krishna. इस भावना में हम कृष्ण के लिए कामुक हो सकते हैं, कृष्ण के लिए लालची हो सकते हैं, कृष्ण के लिए गुस्सा कर सकते हैं, कृष्ण के लिए हम ईर्ष्यालु नहीं हैं। In Krishna Bhakti, envy is poison. इस भक्ति में जो ईर्ष्या है वो क्या है? वो जहर के समान है, Because it's envy of Krishna. क्योंकि हम कृष्ण से ही ईर्ष्या करते हैं। So for that reason, we bow down to Vaishnavas. इसलिए हम वैष्णव के सामने प्रणाम करते हैं And we practice amanina manadena, that we offer all respect to others. You don't have to respect me, I'm a fool. But we offer all respect to others. And this way we curb this tendency to be envious. इसलिए हम ये प्रयास करते हैं, हम उन्हें बोलते हैं सारा सामान हम दूसरे वैष्णवों को देते हैं और अपने लिए कुछ नहीं आशा करते। It's okay. My pranam to you, Prabhuji. You're the future of our society. You know that? See, I see your life differently than you see your life. Because as you are, I once was. What is your age, Prabhuji? If you don't mind saying. No, your age. 8:45
42. So I was also 42. I was also 4. But now I become old. So as I am, you will become, and as you are, I once was. And someday you have to sit here. Each of you has to sit in this chair in your lifetime and preach Krishna consciousness. That is your, I'm a great mystic astrologer. I'm going to give you your future. This is the future for all of you. You're going to struggle in your sadhana. Sometimes you'll be victorious, sometimes you will fall. But if you keep doing what you're doing, you'll become pure devotee. And you have to sit in this chair also and take other people with you. Some of you will have to take disciples also. All of Prabhupada's disciples were old men. How long can we stay? Within your lifetime, you will have the unfortunate experience of seeing every last Prabhupada disciple leave the planet. So think to the future. Your future is very, very bright if you simply follow Srila Prabhupada. Without changing anything. Srila Prabhupada said, this is my success, that I didn't change anything. So the day will come when you will have to sit here. The day will come when some of you will have to accept disciples. Some of you will be sannyasis. And people are doing pranam to you. Oh, did you know? He's a disciple of His Holiness Gopal Krishna Maharaj, the great Acharya that spread Krishna consciousness all over India and printed Prabhupada's. He's a disciple of Gopal Krishna Maharaj. Because they'll be disciples of somebody else, the next in line, next acharyas. So you're saying, oh, Prabhupada disciple. Someday they'll be going, he's a Gopal Krishna Maharaj disciple. He's a Jananandas Goswami Maharaj disciple. Great soul. Please bless us. This is your future. So prepare for your future. Just like a person in investment business. He's thinking 10 years down the road, 20 years, 50 years down the road. And he's making very wise investment. He wants to double his money. So he makes good investments. So when the time comes, 10 years down the road, he's crorepati. So be crorepati in Krishna consciousness. Crores of good qualities. Crores of feeling for Krishna. Invest now in your sadhana. And know that in the future, you will have to sit here. You will have to push on Prabhupada's movement because we're all gone. Okay. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai.